Hello, good evening. Yeah, we're gonna start some electrochemistry PYQs. Wait, hold on. मेरी आवाज साफ आ रही है or is it getting really weird? One second. Can you guys hear me? And you should see me right about now. What's up? What's up? What's up? Maybe शुरुआत में थोड़ा loud था. How's it now? All good? You can see me, hear me clearly. सब ठीक है? Yeah. Hey, Rek, युवराज, आप लोग काफी जल्दी आ गए थे. Yeah. Did the time it was mentioned right that 6:30 बजे ही हो रहा है शुरू सेशन. खैर anyway, so theory bits usually how I do PYQs is कि मैं theory बहुत डिटेल में आपको पढ़ाता हूँ, मतलब like 50-20 minutes I spend on theory and then I do questions. But in electrochemistry हम लोग 6 सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका आप theory देख लेना, यार डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, देख लेना. We'll just start with the questions right away, okay? Hey, what's up, right? आवाज साफ आ रही है? Able to hear me and see me? Sir appeared, yeah. You don't have to call me sir and all. It's okay. Formality इतना जरूरत नहीं. Ashish is fine, man. All right. So, shall we get started? पहला सवाल, yeah. Hey Shriyansh, what's up? What's up? What's up? Interesting questions. Yeah, PYQs in JEE are very, very interesting. I say interesting, not tough, because that's exactly what they are. ठीक है? So, by the way, अगर आपको theory देखना है, description में पूरा playlist है, right? Watch them, like this video, share, and subscribe to it. I know a lot of you are not watching this live, right? So, what are you waiting for? Subscribe तो करो for awesome content like this. Okay, पहला सवाल, theory चाहिए तो description में पूरा playlist है, देख लेना. अभी तक 6 सेशन हुए हैं, एक और सेशन होगा ट्यूसडे को. Cool. Let's get started. Hey Yuvraj, what's up? Which of the following statements is correct for electrolysis of brine solution? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. What's up, Akshat? Akshat, are you the math guy, Akshat? From Discord? Not sure. Okay, anyway, which of the following statements is correct for electrolysis of brine solution? 4 ऑप्शन दिए हैं. Chlorine at cathode, oxygen at cathode, hydrogen at anode, OH minus at cathode. Well, that's very interesting. ठीक है. This is testing some very interesting theories. Both A and B, I'll tell you what they're talking about, and C. Wow, yeah, काफी सही है चीज. What do you think the answer is to this one? Nezuko, बहुत लोग हाई हेलो बोल रहे हैं. आंसर भी तो बता दो. What do you think the answer is going to be according to you? Please सोच के बताइए क्या हो सकता है यहाँ पे आंसर. This is a PYQ. Okay, I'll start the timer now. 45 seconds to answer this. Go ahead. Time starts right now. I gave more than 45 seconds. But try karo. This is one of those theory things जो directly आपको maybe you can attempt it, but also it could be a little tricky. So maybe write the expressions down, the equation that would take place, right? Take the equation that determines the reaction that takes place. उसको आप थोड़ा सा लिखो. Maybe that will help. Maybe that will help. Hey Nand, what's up? What's up? Are you guys trying this question out? Good evening. हाय हेलो गुड इवनिंग हो गया. अभी सवाल भी कर लें थोड़ा. विच क्लास? विच क्लास? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. विच क्लास? A, Shriyansh says A. Okay, all right. It could be, okay. I will not give you any hints. कर लो आप लोग, try कर लो. I hope the timer is actually running. Is the timer actually running or is it just like, oh, it is running. Yeah, there you go. Time up. Time's up. Time's up. Time's up. Time's up. Where is my window? Here is my window. So, couple of you saying A. A lot of you are saying A. एक बात बताओ, क्लोरीन क्यों फॉर्म हुआ कैथोड पे अकॉर्डिंग टू यू? कुछ लोग ये बोल रहे हैं तो बाकी सब लोग भी ये बोल रहे हैं. पकड़े गए. और सी. अच्छा अक्षत. ए और सी. दैट्स द प्रॉब्लम. सी, इफ ईदर ऑफ ए और बी आर राइट, देन सी ऑल्सो हैज टू बी राइट. इसलिए ए बी और सी तीनों गलत हैं. दीज आर आंसर. समझ में आया? नहीं समझ में आया? बताता हूं. दैट्स द ट्रिक. आई सॉल्व द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, देन आई टेल यू द ट्रिक. बट ट्रिक से 10 सेकंड में हो सकता है. ठीक है? मे बी यू फॉरगॉटन द इक्वेशन, यू डोंट नो ऑक्सीडेशन कहां होता है, रिडक्शन कुछ नहीं आता तुमको. इवन देन यू विल सॉल्व इन 10 सेकंड्स. आई टेल यू हाउ. पहली बात दोस्तों, व्हाट इज हैपनिंग? ब्राइन मतलब NaCl और पानी. तो NaCl, as soon as you put it in water, it gives you this Na plus and Cl minus. Very stable, very happy ions. Electrolysis हो रहा है मतलब you are making non-spontaneous reactions spontaneous. Okay, what non-spontaneous reactions? There's another one, right? जैसे ही पानी में आप जाओगे, आप नहीं जा रहे पानी में. Whenever you water is in the mix, this also can happen. This is one of the reactions that competes with the other reaction in reduction, whatever the other reaction may be, right? What is the other reduction reaction? The other reduction reaction is this chap right here, yeah, plus electron giving you Na. This is the other reduction reaction, or in this case oxidation मैंने लिख लिया है. What is the other oxidation reaction?
अदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन विल बी कि भाई ऑक्सीजन भाई साहब जो है बन रहे हैं, O2 गैस दे रहे हैं एंड सम इलेक्ट्रॉन्स, वाटर प्लस H प्लस कुछ कुछ हो रहा है, ठीक है, ठीक है, वाटर गिविंग गिव्स यू दिस एंड कुछ देयर आर सम अदर थिंग्स हैपनिंग, ठीक है, we'll look at that later, but the point is कि it's one of these two that competes and it's this that takes precedence because of over potential. Let me write that down. अगर आपने मेरी थियोरी क्लासेस अटेंड की है देन यू नो कि ओवर पोटेंशियल के कारण ये वाला रिएक्शन नहीं होता है, ऑल्दो आई थिंक आई डोंट रिमेंबर वेरी क्लियरली, बट इसका -0.136 है और इसका -0.123 है, तो ऑल्दो इज अ स्मॉलर वैल्यू फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस टू ओवरकम, दिस डजंट हैपन बिकॉज किनेटिकली इट्स नॉट फीजिबल, ओवर पोटेंशियल एटसेट्रा एटसेट्रा, कोई फैंसी चीजें नहीं है, बहुत आसान चीजें। सो दीज आर द टू रिएक्शंस दैट आर हैपनिंग एंड क्लियरली यू कैन सी दैट, देखो OH माइनस आयंस आ रहे हैं, रिडक्शन मतलब कि कैथोड, ऑक्सीडेशन मतलब कि एनोड, हेंस व्हाट्स द आंसर? अभी कोई डी नहीं बोल रहा है अभी भी कोई डी नहीं बोल रहा है, ओके फाइनली अक्षत, थैंक यू अक्षत, आंसर इज डी, श्योर। डू यू सी दैट? व्हिच क्लास आर यू टीचिंग नाउ? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। निजुको नाम नहीं पढ़ा क्या क्लास का? what kind of question is that, bro? हाँ, it's D, absolutely. Do you see how it's D? If I show you all of this, it may seem a little bit difficult. यार थियोरी पढ़ी नहीं, याद नहीं है, बट इज JEE मेन गाइस, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, बट ठीक है, से थियोरेटिकली उन्होंने नहीं पढ़ा है, ओके, से यू हैवंट रेड दिस, इवन इफ यू हैवंट रेड दिस टॉपिक, राइट? अब लॉजिक से कैसे सॉल्व करोगे? लॉजिक से मे बी यू हैव मिक्स्ड अप रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, मे बी यू हैव मिक्स्ड इट अप, दिस इज अ सिंगल आंसर करेक्ट क्वेश्चन, एक से ज्यादा सही नहीं हो सकता है, एंड यू नो यू हैव सम आइडिया कि यार ये दोनों तो कंपीट करते हैं, आई नो इट्स नॉट एट कैथोड, इट्स सपोज्ड टू बी एन एनोड, बट मे बी यू फॉरगॉटन, ठीक है, एंड देन लाइक यू आर सेइंग, अक्षर वाज सेइंग यार या तो A या C हो सकता है, तो अगर A होगा तो C भी तो करेक्ट होगा। सी इफ A और B either of this is correct, then C also has to be correct, which is not possible, hence D must be the answer. Elimination से ये, this is like a way of cross checking, ठीक है, मैंने कुछ याद नहीं आ रहा था, ऑक्सीडेशन क्या होता है, यू नो रिडक्शन क्या होता है, कैथोड, और कुछ याद नहीं, मेरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं है मैंने, तभी तुम उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बेसिक से फ्रॉम 10th ग्रेड। नाउ अगर आपने पढ़ा है, इफ यू हैव स्टडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दिस इज द वे टू गो अबाउट इट, ठीक है, you have this reaction which has like -2.73 volts, this as you know, I mean you may not know, but ठीक है, कुछ है something lower than this, -1 point something या -0.8 point ऐसा कुछ नंबर है, I don't remember the exact number, the exact number is not important, the point is कि हाइड्रोजन निकलता है at cathode, okay, because this is reduction, and this is what happens at the anode because of oxidation. How is this reduction? You have +1 stage hydrogen going to 0, you have -1 going to 0, ये है oxidation दोस्तों। Yes, Nezuko, it is 12th grade. All right. So a little bit of problem. Akshat, it's been more than 5 months since I've studied electrochem, sir. Akshat, एक बात बता, are you from Discord or like just checking in? Is it the same Akshat, the math guy, or are you a regular on this channel? I haven't seen you around here before. All right. You're all good, right? How's option D? Yuvraj, the regulars, Revati. Okay, thanks for that. Rek, सब सही है ना? Shriyansh, D is the correct answer. सब ठीक है? पहला सवाल ही भारी हो गया, JEE मेन के सवाल है दोस्तों, थोड़े तो भारी होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन हाफ H2 plus AgCl, you're not Discord chat, okay Akshay, thanks, it's okay, the reaction half H2 plus AgCl gives you H plus plus Cl minus plus Ag in the which galvanic cell? अब ये भी डरावना लग रहा होगा, this has to do with a soluble metal insoluble इलेक्ट्रोड, जिसको हमने काफी डिटेल में इसको हमने डाइसेक्ट किया था इन आवर थ्योरी सेशंस। मे बी यू सी दिस, यू नो द आंसर राइट अवे, ओके, बट अगर वो नहीं आ जाए तब भी आल्सो आई टेल यू हाउ टू डू इट। लेट्स ट्राई दिस वन आउट, राइट, टेक 45 सेकंड्स, थियोरेटिकल आइडिया है। व्हाट्स अप सिद्धनाई, हेलो, हाउ यू डूइंग? ये वाला ट्राई करो। देखो, अगर आपने सी थ्योरी नहीं पढ़ी है, दिस इज लाइक वन ऑफ दोस क्वेश्चंस यू शुड लीव। आई एम नॉट बीइंग, आई एम बीइंग वेरी स्ट्रेट विद यू, या लाइक टेस्ट क्रिकेट, you leave some balls that are good balls, you play cricket, maybe not a lot of you play cricket these days, but you got to respect the bowler, if it's a good ball, leave the ball, bhai. In JEE, whether it's main or advanced, जो नहीं आता है ना उसको छोड़ दो, because negative marking is going to completely destroy you, rank wise, everything, moral wise, whatever wise, ठीक है, तो please focus on what you know, and अगर ये theory पढ़ी है तो मार्क करो, नहीं theory पढ़ी है तो छोड़ दो, अभी के लिए वो सब ज्ञान छोड़ो। Let's try solving this question, I'll tell you how to solve if you're not sure. अरे वाह, रेवती, अक्षत,
Yuvraj and Hydra Shlok, are you a fan of Marvel or what? Okay, a lot of you are saying C. That's awesome, that's great. Ayushi Nagin. Oh my god, guys, your names are hilarious at times, huh? C. Okay, all right. C. I agree with you. C. C is the right answer. But how did we get to C? How did we get to it? देखो, between these two, what do we have first? Left hand side में anode, यहाँ पे cathode. मतलब कि you must have this whole idea of what? H plus ion on the anode being formed, right? Because see, यहाँ बन रहा है ये, so this is oxidation, so this is anode, and ये हो रहे हैं भाई साहब reduce, तो ये होंगे cathode में, है ना? So right off the bat, you say कि HCl यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो it has to be one of these two, B और C. ठीक है, ऑप्शन देख के देख रहा हूँ सिर्फ. ओके, कैथोड में क्या होना चाहिए? AgCl होना चाहिए. अरे भाई साहब, AgCl तो C में ही है. देखो, इतना मुश्किल सवाल नहीं है, मैंने बोला तो छोड़ दो, बट अगर थोड़ा सा दृढ़ता है आप में, if you want to try, then you can solve it just by eliminating options as well. It cannot be this. Where did AgNO3 come from, boss? AgCl है, insoluble, right? So know how elimination works. Okay, यहां पे होना चाहिए H प्लस, क्योंकि ये एनोड. ओके, और एनोड अगर नहीं है, अगर H प्लस नहीं है, तो यू एलिमिनेट दोस ऑप्शंस. सो फर्स्ट एलिमिनेशन इज एलिमिनेट, फर्स्ट थिंग यू डू इज एलिमिनेट A and D. What do you do next? Well, look at cathode. Cathode must have AgCl, and that's it. That's the answer. This is my way of doing it. There is no other way I would do it in an exam. I wouldn't even not even bother going a solution. I'm like, भाई option दिख रहा है, खत्म करो, move on. But it's okay. Since we are doing this teaching thing, right? I'll tell you the proper way of doing this with all the theory. वो सब भी प्यार से करते हैं, don't worry. But अगर सवाल ऐसा है, ऐसे ही करना है. अगर जल्दी हो तो, अगर if you are confident and you have some other way, please go ahead and do it. Theoretical way कैसे करोगे? This is your anode half reaction, and both of these together give you the cathode reaction. Okay, which is this right here. Why both of this together? Again, theory में नीचे जाके देख लेना. This is what gives you the KSP value. This is basically reduction of Ag plus Ag. This is E naught or E Ag plus Ag. Okay, ठीक है? All right. Same logic. Lovely. Suvarna, absolutely right. Absolutely right. What is different? समझा नहीं आपकी बात पियानो जी. I did not understand what you're saying. Question कितने पुराने हैं? अक्षत, मोस्टली 23 के ही मैंने लिए. 23 गलती से एक दो 22 के आगे होंगे, बट मोस्टली 23 के ही हैं. हाँ, 90s. अक्षत नहीं यार, अरे मैंने 23 का लिया, मैं बता तो रहा हूं. I have one source and my point is to give you the most recent questions first. फिर उसके बाद हम लोग आराम से पुराने वाले करते रहेंगे. So 90s के सवाल नहीं है. I will not. Why will I do that to you? मैं क्यों आपको ऐसा करूंगा जब जो सवाल आपको कभी आने नहीं वाला, आपको 90 सवाल करने कोई फायदा नहीं है. It's never gonna come right now. ठीक है? और अगर आने ही वाले तो बाद में करना. पहले do 23, then do 22, then do 21, then do 20, और उसके बाद पीछे आराम से जाते जाओ. और if you want to skip, then from 20 go to 90. वो बीच वाले 15-16 वाले करने कोई फायदा नहीं है. ठीक है? All right. Next question. Good job, everybody who got this right. Excellent work. Sweet, sweet, sweet. FeO4 2 minus gives you Fe3 plus, gives you Fe2 plus, gives you Fe0. Fe0 मतलब just the metal. Okay. What is E naught for FeO4 2 minus to Fe2 plus? मतलब somewhere in the middle over here. कुछ value है x into 10 power minus 3. What is the value of x? Take 45 seconds. Try and do it. ठीक है? You have got all these things, all these different oxidation states of Fe. अगर आपने गलती से JD खोली होगी, you will see a lot of things like this. It's scary, right? They will say every ion has some बीच वाले species and things you won't even dreamed about. But normally in real life उनमें से कुछ species actually आपको दिखते हैं, बाकी सब theoretical है, कम समय के लिए होती है, वो सब चीजें. JEE has picked one of those things, but it's not a difficult question. इतना मुश्किल सवाल नहीं है. All you've got to do is realize कि देखो, you have half reactions to begin with, and in the end also you get a half reaction. What am I talking about? देखो, all of these are reduction half reactions, right? This, they're all reduction half reactions. In fact, this is also, oops, time up हो गया. एक मिनट आपस जाके लिख लेते हैं फिर से. Reduction और 45 seconds ले लो. Reduction half reaction. Now, if all of these are reduction half reactions, how do you find out their E
वैल्यू, ई नॉट वैल्यू, राइट? ई नॉट कैसे निकालोगे? यू रिमेंबर दैट एक्सप्रेशन delta G naught equal to minus NFE? Use this. Why? Because this is extensive, whereas this is intensive, which means you cannot go around adding E naught values, but you can go around adding G naught values, delta G naught values. Like, wait a minute. But हम लोग जब पूरा सेल होता है एनोड एंड कैथोड, then we happily add E naught values. Well, that's a consequence of you adding the delta G naught values. ठीक है, ये सब मैं थियोरी में कर चुका हूं, तो देख लेना. अभी के लिए सवाल ट्राई करो, सवाल ट्राई करो. हाँ, ये बार बार आ ही रहे हैं भाई साहब, ये क्या होगा? दिस इज बगिंग आउट, दिस इज बगिंग आउट. वन मोमेंट, देयर यू गो, चला गया. या कैन वी ट्राई दिस आउट गाइस? व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एक्स ओवर हियर? इट्स ओके, थोड़ा टाइम लगता है, लगने दो. वो 45 सेकंड और मैंने ऐसे ही लिखा है. ट्राई इट आउट folks. There are some people who came, said hi and ran off. I hope you're trying this question out also. Do you need like a pick me up? I can tell you how to start this question since it's taking a little bit of time. Write these down, just give them all numbers, okay? This is maybe 1, this is 2, this is 3, and this chap right here, right? This guy is 4, which means you're going from FeO4 2 minus all the way to Fe2 plus, okay? Yeah, Yuvraj, you take your time. मैं धीरे धीरे I'll keep explaining slowly. You take your time. Hey, Samyak, what's happening? You take your time. तुम करो सवाल, कोई चक्कर नहीं है. Yeah, for the benefit of other people जिनको लग रहा है यार इसको शुरू कहां से करें, उनके लिए I'm just giving them a little bit of a pick me up, like a little bit of a starter. So what do you do over here? Well, delta G naught is additive, है ना? Delta G naught of what? Well, delta G naught of this reaction 4, मैंने delta G लिखा है, ठीक है, delta G naught लिख देते हैं. Okay, all right. Will be 1 plus 2. Why 1 plus 2? Because I go from here to here and then I go from here to here. Remember, delta G naught is the state function, so I can do this. I cannot do this with E naught. Okay, what do I mean? मैं ऐसा नहीं कर सकता कि देखो Fe042 2 minus say Fe3 plus मतलब 2.2 और 0.7 वोल्ट निकालो, हो गया. E naught is not a state function. Delta G naught is a state function. ठीक है, थर्मो ठीक से पढ़ो. That's why electrochemistry is very interesting, because you got to do thermo before that. People were trying the question, go ahead, keep trying. So now अब क्या बचा है? डेल्टा जी नॉट लिख दो. NFE, what is delta G naught? Minus NF E naught. N क्या है? Oh, N कैसे आया? How did I get this NS3? Anyone over here? Why did I get NS3? देखो यहां पे in FeO4 2 minus, what is the oxidation state of Fe? I do plus 4 into minus 2. देखो पूरा ये redox वाला ideas भी आ गए. बदमाशी हो रही है काफी, right? You have Fe plus 4 into minus 2 is equal to minus 2. मतलब Fe is equal to plus 6. Oxidation state of ion is going from plus 6 to plus 3. मतलब बदलाव हुआ n equal to 3. This is the same n that I am putting over here. Okay? For the first reaction. Answer is 1825. Yuvraj. Yuvraj bhai sahab, on fire. Thank you, Yuvraj, for that answer. Thank you. Excellent work. Samyak is saying plus 6. Okay, thank you, Rick. Absolutely. Plus 6. Yeah. So, that's why I did that. And are you okay with minus 6.6 F क्यों लिखा है? ठीक है ना? Same चीज करो. ये वाला तो simple है. 2 to 3 में कुछ effort नहीं लगाना है. Yeah, which is not 2 to 3, but basically 2. This guy here. 3 plus to 2 plus, इसमें कोई effort नहीं लगाना है, right? Because n is equal to 1 over here. You're going from 3 plus to 2 plus. Simple. Okay. ये हो गए आपके दोनों. Now, if I sum both of these up, it will be equal to G naught of 4. But what is G naught of 4? I don't know that yet. Ooh. What is G naught of 4? 7.3 times F. हाँ, इन दोनों को मैंने add किया. This is additive, right? This is equal to this plus this. Okay. And that is going to be equal to minus 4 times F times E naught. Why minus 4 now? देखो, you're going from plus 6 to plus 2. So n equal to 4. Yeah, this is that same n. It is equal to 4 यहाँ पे same चीज. ठीक है? Plus 6 to plus 2. है ना? Electrochemistry involves basic concepts of ionic, thermo, and redox. I agree, Aditya Vikram Maheshwari ji. Yeah, that's why it seems real tough, because you have all of these things. और सबको लगाना पड़ता है. In fact, my second session, you'll feel like, thankfully,
नेक्स्ट वीक में हम लोग जो करने वाले हैं, which will be Electrochemistry part 2 of PYQs when we do ionic conductivity. You like, yeah, this is easy. This is easy. इस वाले पार्ट में ये सब आइडिया लगाने पड़ते हैं. What's up, Arman? How you doing? It's all right. So 1825. Rec also says 1825. Yes. I'm inclined to agree with you guys. All right. सवाल आपके सर के, मेरे सर के ऊपर है, आपके सर के ऊपर नहीं, मेरे सर के ऊपर. This is a question, Arman, right here. So you add both of these together. What do you get? Now there's not much to do, na? Just do 7.3 by 4. 7.3 by 4 is 1.825. And आपको बोला है कि बताओ x into 10 power minus 3. मतलब इसको मल्टीप्लाई करो तुम by 10 by 1000, which gives you 1825 as the answer. ये माइनस माइनस खट के हो गया प्लस. ठीक है, आगे बढ़ा जाए. यस जयवर्धन, अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए स्कोरिंग है. इट डिपेंड्स ऑन, सी JEE Advanced में you have to pick your battles. If you're going at syllabus coverage, then you're targeting a rank less than 1000. I am being very straight with you. अगर आपका प्लान है कि पूरा पढ़ के जाएंगे, तब यही करना चाहिए. अगर आपका 1000 के अंडर रैंक कर रहे हो प्लान, अगर 1000 के अंडर प्लान नहीं कर रहे हो रैंक, yeah, you know what rank you can get theoretically, approximately. थोड़ा आइडिया लग जाता है ना पढ़ाई के दौरान, तो कोई फायदा नहीं है. पूरा क्यों पढ़ोगे? जो आता है ठीक से करो ना. So when you're saying electrochemistry scoring or not, it depends on your comfort level. If you have studied it properly, it's scoring. है ना? ठीक है? Cool. अगला सवाल. Good job, Rek and Yuvraj. Excellent work. Yes, Arman, absolutely right. You need 1825. Thank you. You need all the theory. Yes, absolutely. अगला सवाल JEE main का फिर से. The number of incorrect statements. देखो, theory आ जाती है ऐसी. अब वो सवाल कैसा था, ये सवाल कैसा है, लक पे डिपेंडेंट है ना, स्कोरिंग है कि नहीं है. The number of incorrect statements from the following is, statement number 1, electrical work that a reaction can perform at constant pressure and temperature is equal to reaction Gibbs energy. E naught cell is dependent on pressure. d E naught cell by dt. ये टाइम नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए. बदल देते हैं, रुको. Is equal to delta S naught by NF. A cell is operating reversibly if the cell potential is exactly balanced by an opposing source of potential difference. भाई साहब, चार statements, कितने हैं सही इसमें से? That is what is being asked for. What do you think? I'll start the timer in just a second. अभी हम बस उस T को fix कर दें. That is bugging me. It should be capital T. पता नहीं ये बड़ा छोटा T कैसे हो गया? Capital T. Time नहीं है, temperature है. We are not doing anything with time. जरूरी है ये आइडिया, टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं इधर. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टाइमर. वेल, अभी हमारे लिए टाइम का कॉन्सेप्ट तो है, राइट? वी आर ऑलवेज ऑन अ क्लॉक. अक्षत इज सेइंग 2, सम्यक इज सेइंग 2. अंडर 8K सेटिस्फाइंग, बहुत अच्छी बात है जयवर्धन. तब देखो, मैं प्लैटरी बोल रहा हूं. व्हाटएवर योर टारगेट इज योर टारगेट, राइट? आई एम नॉट सेइंग इट्स ऑसम और इट्स जो भी है, मैं आई एम नॉट कमेंटिंग दैट, बट यू शुड हैव सम आइडिया की यू नो रफली व्हाट इज इट दैट यू आर प्लानिंग टू डू. और एक और, एक्चुअली द मोस्ट zen way is कि रैंक में भूल जाओ, जो कर सकते हो करो, ट्राई योर बेस्ट. दैट इज द फिलॉसफी आई कम विद. आई डोंट नो इफ दैट इज समथिंग यू गाइस विल रेजोनेट विद और विल यू बी लाइक नहीं ये क्या बोल रहा है. पर मेरा आइडिया है कि जितना आता है उतना करो, रैंक जो आएगी देखा जाएगा. रैंक तो वही आएगी ना जितना आप करोगे, ट्राई करोगे, उसके हिसाब से आई जाएगी. So it doesn't matter, and that way you're not worried about anything. Yeah, it's like a very zen way of doing things. You put in your best effort. जब हो जो होगा देखा जाएगा. Yeah. So that is a better philosophy in my opinion. Khair. Only one correct. Arman is saying only one. Akshat and Samyak are saying 2. What do you think? Akshat is saying B and D are incorrect. अच्छा. Suprabha is saying 2 is the answer. Shreyansh बोल रहे हैं B. B मतलब 1. Yeah, Arman, I agree. Rank वैंक तो consequence होता है ना. What you have to focus on is on the effort. आपके हाथ में effort है. Rank आपके हाथ में तो है नहीं. Effort आप लगाओ ठीक से, right? And make sure that you mark what is according to you correct. वो तुक्केबाजी का लाइफ में कॉन्सेप्ट नहीं होता है. A lot of people say कि गेस कर दो, रैंक बढ़ जाएगी 100 बार. क्या फर्क पड़ता है? What does it matter in life? Seriously, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, आपको आपका कॉन्फिडेंस, that is what matters in life. Okay, cool. So let's go back to our point. That's good. Samak, you have an excellent teacher. Complex, what's up? It's okay, Complex. Thank you for joining now. Only one correct, Arman. B. Only one correct. Only one incorrect, you mean, na? Arman? Everybody else, दोस्तों, is asking you to select the incorrect statement.
ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं 2, कुछ लोग बोल रहे हैं 1। इनकरेक्ट कौन सा है? पहला वाला तो करेक्ट है फॉर श्योर, राइट, और ये वाला भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। कैसे? देखो सी मैंने तो आपको करवाया था, आई डिड दिस इन क्लास इन थ्योरी, आई टोल्ड यू दैट यू डू दिस, देन एट कांस्टेंट प्रेशर ये बन जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, या यू गेट दिस। आई डोंट नो, मैंने फिर से यहाँ पे छोटा टी क्यों लिख दिया भाई साहब? व्हाट इज दिस बीमारी? छोटा टी का को लिख दिया? दिस इज समथिंग दैट्स वेरी फनी, लेट मी फिक्स दैट राइट अवे। नो स्मॉल टी, वी नीड द बिग वन। ओके होल्ड ऑन, टी, अरे ब्लू नहीं, सफेद कलर चाहिए। टी टी, वाओ, या ओके, एनीवे, ठीक है, कूल, hold on, and this right here is something that we've also spoken of, right? Non-expansion, and in this case that happens to be electrical work. This was the first class जो theory हमने की थी, तो ये भी सही है। D, it makes sense. A cell is operating reversibly if the cell potential is exactly balanced by an opposing source of potential difference. What it is trying to say? इसकी देखो, this is describing equilibrium वाला situation. Say a cell potential is negative some volts. मैं exactly उतना ही potential apply कर रहा हूं. So now the cell can go in either direction. It can go spontaneous or non-spontaneous. So it's reversible. That's all it's saying. ये भी सही है. B is clearly incorrect. It doesn't depend on pressure, right? क्यों? क्योंकि E naught is defined at 1 bar, and that's the definition of E bar. You fix the pressure. So if it's not a variable, the definition of E naught is by at 1 bar. And अगर gases है तो 1 bar, अगर liquids हैं, if you have aqueous things, then you have concentration 1 molar. So it's fixed. It's not dependent on pressure. Okay? Exactly. Shreyans, the point is it is defined as standard pressure. Yeah? Yes, Aditya Vikram, absolutely. Sweet. Akshat is saying it should be in equilibrium. Akshat, equilibrium का वही तो मतलब हुआ. Equilibrium means, by the way, guys, this is a very interesting thing that Akshat pointed out. Very interesting thing. The reason why the word reversible is written, दो चीजें आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे. पहली चीज, equilibrium means reactions are happening, okay, at the microscopic level. Macroscopically कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है. Microscopically थोड़ा बहुत हो रहा है. Macroscopically doesn't matter. ठीक है. दूसरी बात, reversibly क्यों लिखा है? क्योंकि usually the K value of a spontaneous electrochem thing is so much greater than 10 power 3 that it almost goes to completion. And a non-spontaneous K value is much lesser than 10 power minus 3, so that it almost doesn't start, right? So the reaction is heavily towards the left or the right hand side. समझ रहे हैं आप? इसलिए it is not reversible. अगर ये बात थोड़ी अजीब लग रही है, थ्योरी देख लो और खुद ही कैलकुलेट कर लो. 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए what is the K value? Try it out. तो सिंपल सा है ना. E naught equal to E is equal to E naught plus RT ln K, right? उसमें तुम डाल दो, K की वैल्यू निकाल लो, है ना? You will get like a ridiculously large value, 10 power 6, 10 power 8 कुछ आएगा. So this is not reversible. Both of these cases are not reversible. Okay? Both of these are irreversible cases. That's a great point that you made, Akshat. I hope you understand this now. Okay? Yeah. थोड़ा exactly से थोड़ा ज्यादा हो जाए तब रिवर्स हो सकता है. Exactly. Yeah. Sure. Yeah. Exact. Samyak hitting the nail on the head. You know why I've called out Samyak's name? Because he used the word NCRT. And a lot of students, while they prepare for JEE, for some reason they skip NCRT. They're like, ये वीडियो ले लेंगे, ये टेस्ट सीरीज ले लेंगे और हम लोग जो है वन शॉट देख लेंगे. भाई NCRT पढ़ लो. I keep saying this unironically. I'm not saying this just to mess with you guys. NCRT से आधी चीजें डायरेक्टली वहां से आती हैं भाई. लाइक नहीं सिर्फ केमिस्ट्री में आती है, ऐसा कुछ नहीं है. हर सब्जेक्ट में ऐसा है. ठीक है, प्लीज रीड NCRT. योर लाइफ विल बी अ लॉट इजियर इफ यू डू NCRT. खैर, द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन बी. अगला सवाल पे जाए. यस ऑसम. ठीक है, कूल, ग्रेट. थियोरेटिकल क्वेश्चन आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. ये लो एक और थियोरेटिकल क्वेश्चन. द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग. देखो जेई की हरकतें. नाउ न्यूमेरिकल एंट्री दे रहा है, बट न्यूमेरिकल एंट्री में इन जेई मेन इज +4 -1. जेई एडवांस में +4 0 है, बट जेई मेन में +4 -1 है. तो ध्यान रखना, तुक्केबाजी मत करना. अगर पक्का नहीं है तो छोड़ दो यार. इसलिए थियोरी पढ़ लो, आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे. ई सेल इज एन इंटेंसिव पैरामीटर.
नेगेटिव, इसमें करेक्ट दिखाना है, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट्स. A negative E naught means that a redox couple is a stronger reducing agent than the H plus H2 couple. The amount of electricity required for oxidation or reduction depends on the stoichiometry of the electrode reaction. Last option. The amount of chemical reaction which occurs at any electrode during electrolysis by current is proportional to the amount of electricity, quantity of electricity passed through electrolyte. ये वाला तो सही लग रहा है. खैर बताओ कितने होंगे सही? Inorganic and organic as well. Absolutely right, Jayavardhan. Yuvraj, reversible बोला है ना युवराज, तो D would be correct. That's why they said it's reversible. Yeah, it will be reversible when it's equal. I know you're बाल की खालों को दाड़ोगे कि नहीं थोड़ा सा आगे पीछे होना चाहिए, थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो yeah, sure, I agree, तब भी reversible होगा. If it's exactly equal तब भी reversible होगा, right? Yeah, at equilibrium you have reversible reactions, right? माइक्रोस्कोपली चीजें चलती जाती है, माइक्रोस्कोपली कुछ नहीं दिखता है. E naught will be zero, right? मतलब not E naught, sorry, E will be zero, right? Death of cell etc. Equilibrium मतलब कि Q is equal to K. Sure, reversible है, कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है. Okay. Yeah, पिछले वाले का आंसर was 1. Okay, B was the only incorrect one, इसलिए हाईलाइटेड था. इस वाले पे सम्यक और अरमान बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं 4. ठीक है, सम्यक, नाइस. ओके, अरमान as well. Arman are both saying 4. Yeah, I agree with these guys. I forgot to start the timer on this one. Sorry. Rec also saying 4. चलो timer कर देते हैं. Yes, all are correct. Absolutely. सब सही है. Intensive तो definitely है. You know this. What is the meaning of this negative E naught वाला business? देखो मैंने 3 यहाँ पे लिख दिए. Negative 0.8, 0 and 0.6. Now, a negative E naught मतलब कि for the cell reaction to be spontaneous, this must act as the anode and this as the cathode. If that is happening, that means that ये reaction हो रहा है reverse, right? And reverse हो रहा है तो it gets oxidized. If it is getting oxidized, then it is reducing this. Since it is reducing this, मतलब it's a stronger reducing agent. थोड़ा theory. I hope that was okay. ये तो है ही. Yes, the concept of N factor. Yeah, N factor इसमें ingrained है. लास्ट वाला या W equal to ZIT. देखो सब चीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पूछ ली एक सवाल में. या एक्सलेंट. श्रेयांश, यस 4. राइट. सैम, इट विल लुक कूलर. वाह सैम. इट विल लुक कूलर. ऑलराइट सैम, आई विल राइट सैम. बट सैम तो बहुत होंगे, बट सम्यक गुप्ता तो एक ही है ना. खैर चलो अगला सवाल देखा जाए. The logarithm of equilibrium constant for the reaction PD2 plus 4Cl minus equilibrium PdCl4 minus is dash nearest integer. Given that blah 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 कुछ चीजें दी हुई हैं. Logarithm of equilibrium constant. So technically इधर डबल हेड एरो नहीं होना चाहिए. डबल हेड एरो इसलिए दिया हुआ है ताकि आप गेस ना कर पाए कि किस डायरेक्शन में जा रहा है रिएक्शन. ठीक है, अगर ये 0.83 है तो दिस डेफिनेटली सिंगल हेड एरो. 0.6 डेफिनेटली सिंगल हेड एरो है. ठीक है, कोई डाउट नहीं है. ओके, अगला वाला करें. ओह जयवर्धन, थैंक्स ब्रो. 2-3 आवर्स. यार मैं 2-3 घंटे का सवाल सेशन कर लेता, बट आई हैव लाइक दिस मेस्ड अप नेक एंड बैक व्हिच लेट्स मी डू ओनली 1 hour सेशंस. बट श्योर हम लोग करते रहेंगे. वील डू टन्स ऑफ क्वेश्चन फॉर जेईई में, हम लोग करते रहेंगे जयवर्धन. दैट्स माय गोल. Physical inorganic chemistry, I'll meet you like 3 times a week. As of now, that's a plan. 3 times a week, I'll keep doing questions. We are starting revision session starting on 30th. Thanks for the kind words, Jayavardhan, though. Thank you. Dhairya is saying something. Let me read what Dhairya is saying. Negative SRP is strong reducing agent, oxidized, hence it requires energy, so it gets reduced. ठीक है, सही है Dhairya. Arman saying 6. Yes, Samyak, absolutely. Yes, Arman, lovely. Good, great methodology. Excellent. I wish I could do 2-3 hour sessions, but it's just, something that's difficult for me to do because of my back. Bangalore key roads ka den. Bike rides on Bangalore. And also basketball. I think it's also primarily basketball because I used to play a lot of it in college and I used to fall a lot and still play with those injured ankles and whatever. So, I was not good. I just like playing. All right. Here is the timer. I forgot to start the timer. Arman is saying 6. Nearest answer. ठीक है. अरमान जी बोल रहे हैं 6.
और कोई? Anybody else wants to take a shot at this? Sai, welcome Sai. Would you prefer to be called Sai or Kiran? Since we are, using preferred names. Let's say time's up. काफी हम लोग ने time pass कर लिया. Let's go ahead and give you the answer. Use Namma Yatri. Samyak is in Bangalore or what? What is Namma Yatri, bro? To go where? मतलब अभी office, dude. My office is in Bannerghatta main road, okay? And Bannerghatta main road is probably the worst road in Bangalore because of whatever reasons, yeah? Maybe of the topology, यहाँ पे सड़क बनाओ टूट जाती है, जो भी कारण रहे, ठीक है? It's like, जब तक मेट्रो नहीं बनता ना, my life is going to be difficult. बना लो यार मेट्रो, जल्दी बना लो. खैर. You also got 6, okay? Rek and Yuvraj also got 6. All right. Looks like the answer should be 6 then, no? देखते हैं. How do you do this? How do we do this? Simple things, always first principle say equation लिख लो. Maybe you know what the equation is, but just for my sake, मेरे लिए, चलो मेरे लिए नहीं, अपने लिए कर लो, equation लिखो. I'll tell you why. Because अगर तुम गलती करोगे यहाँ पे, if you make a mistake on this first step, you will get a negative of the answer. Instead of +6, you'll get -6. And then you'll be like, bro, -6 means the reaction is not spontaneous. And 6 means the reaction is very spontaneous. ठीक है? Reaction लिख लो. इसलिए बोल रहा हूँ कि ये लिख लो. Delta G equal to this thing. And write it from this way. इस reaction को याद रखो. This is from thermo. And the rest you can derive. Right? Delta G is 0 at equilibrium. And also at equilibrium, you're going to say that delta G is minus NFE. तो ये भाई साहब चले गए. तो बचा क्या? बचा ये. E naught is going to be equal to RT ln K by this thing. And when you got to convert this thing, right? 2.303 converts ln to log. That part's important as well. So I write down E naught to be 0.06 by 2. Why by 2? Because देखो यहाँ पे है 2 electron transfer. 2 क्यों? ध्यान से देखो. This is PD 2 plus. What is happening here? PD plus 4 into -1 equal to -2. एक मिनट. What? No, this doesn't sound right. 2 इलेक्ट्रॉन कहां से हुए फिर? Oh, wait. Hold up. कुछ यहाँ पे messy है. Shouldn't this be PD4 plus? Hey, focus goes blah, blah, blah. Yeah, I get it. Hold on. Deactivate and activate. Okay, sweet. Hey, कुछ fishy हो रहा है यहाँ पे. सर ध्यान से नहीं देखे दे रहा है. हाँ, अरमान. That's weird. Yeah, just keeps going out of focus at times. I have a small this thing here. अच्छा हाँ, sorry. मैं क्यों करने की कोशिश कर रहा हूँ? Why am I trying to reinvent the wheel? I got caught up in what I was doing. It is not a direct reaction, right? You got both of these reactions happening. 2 different reactions. Yeah, यहाँ पे already दिया हुआ है. मैं क्यों दिमाग लगा रहा था? It's a 2 electron transfer system. Luckily ये figure out नहीं करना है. अगर ये figure out करना होता, then this would be a JEE advanced question. Because you'll be like, ये क्या हो रहा है? PD का तो कुछ बदला ही नहीं, oxidation state, है ना? But so then that would get a little scary. Khair, but that's not happening here. You've been given it's a 2 electron system. तो ठीक है, कोई tension नहीं है. That's why this number is 2. So you get 0.18 to be equal to this guy right here. How did I get 0.8? I got this as the cathode and this as the anode. How did I get this as the anode? Because देखो ये reaction है यहाँ पे. Okay? So I have to reverse this reaction. That's why I know that this is the anode. क्योंकि ये यहाँ पे RHS पे, and look at this. Here it's on the LHS. So if I have to reverse this, it must be the anode. Why? Because E is equal to E naught cathode minus E naught anode when you're talking about reduction potentials all the way from the first principles. ठीक है? Cool. So now what is left? 9 and 6. 9 and 6. Did we mess something or did we miss something? No, I don't think we missed anything, right? So log K should be equal to 6 from here. Does that right? Does that? Yeah. 0.06 into 2 is equal to log K. There are 2 reactions. Okay. But hold on. Did we skip any step here? Okay, cool. Looks good. Log K is 6. That's the answer. Okay, sweet. Yeah. I was just checking, just quickly checking. ठीक है. अगला सवाल करें. How you feeling by the way? Are these questions like hard or whatever? Maybe थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहे होंगे. इसलिए I've put a few theory questions and then numerical दोनों साथ में रखा है मैंने.
कोई भी आ सकता है, एक्चुअल जेई में कोई भी आ सकता है. ओके स्वीट. या 6 इज द आंसर. अगला सवाल. अरे ये सवाल तो वैसे ही है, यही तो बात है. जेई सेम चीज 2-3 तरीके से पूछता है 2023 में, सेम चीज बट 2 अलग अलग तरीके से, अलग अलग. यू समटाइम्स स्टूडेंट से ना, अरे यार इस शिफ्ट में आसान पेपर आ गया, इस शिफ्ट मुश्किल. कुछ नहीं होता है, सेम ही सवाल आते हैं, कोई आसान मुश्किल नहीं है. द रिडक्शन पोटेंशियल ए नॉट ई नॉट इन वी ऑफ MnO4 minus 2 Mn is what? And you've got 3 equations over here. You're going from +7 to +4 +4 to +2 +2 to 0. Sorry, 0. Right? Try करो इसको. Shall we try it out? Not hard? Okay, great. Please try this one out. Try करिए इसको. जयवर्धन कहां गए आप? Are you trying this question out? Dhairya gave me some theory earlier. Are they still here? Shriyansh. I know Arman, Samyak, Rek, you guys are here. Yuvraj, you're here as well. बाकी लोग कहां गए? Just scrolling up to see where these guys go. आदित्य विक्रम. Complex. अच्छा complex करा था मैथ्स के, जेई के एडवांस के सवाल. करो मैथ्स के सवाल, अच्छी बात है. 2.69 is what says Arman. Okay. Let's see. देखते हैं. So again we'll do the same thing. 1 2 3 and 4. 4 क्या हो गया इसका? सबको ऐड करो. Yeah, what's the approach? The approach is reduction potential of half cell is going to be equal to delta G naught minus NFE. You can add delta G naught, you cannot add E naught. Same theory, nothing new here. 4 is 1 2 and 3, तीनों को ऐड करना है. अब बस ये बात है, you have to make sure that the n values are correct. So here n is equal to 3, here n is equal to 2, here n is equal to 2 again. 3 + 2 + 2 7, राइट? सही है, ठीक है. तो पहले वाले का हो जाएगा 3 times f times 1.68. नेगेटिव साइन मत भूलना. सेम विथ 2 विल बी नेगेटिव साइन टाइम्स 2 बिकॉज यहां पे 2 times 1.21. एंड लास्ट वाले का सेम आइडिया विद -2, बट हियर बी केयरफुल, देयर इज अ -1.03. जल्दी में इस नेगेटिव साइन को मत भूलना. Add them all up, okay? That will be equal to NFE. What is this n? This n is simply 7. वो यहाँ पे दिया हुआ है. No, Arman changed their answer. Okay, Arman now wants to say that the answer is 0.77. Arman ने n गलत ले दिया था क्या? That's okay. Doesn't matter. यहाँ से solve करके बताओ. What is it now? I've given you most of the steps. Yeah, Arman is saying yes. Yuvraj also saying the same. Okay. Sweet. Okay. Anybody else wants to give this a shot? Rek? Awesome. Excellent stuff. Samyak, Rek, okay, like this, brilliant. सीधा सवाल, बस थोड़ा ध्यान से करने वाला. देखो न्यूमेरिकल एंट्री है, तो make sure that you do this आराम से, प्यार से. Let's go on to the next question. ये वाला इंटरेस्टिंग है भाई, ये वाला इंटरेस्टिंग है. At 298 Kelvin, the standard reduction potential for this electrode is this value. ये तो मालूम है, मत कर लिया होगा मे बी अभी तक. Now this is I think they're interesting. KSP of this thing is this value, 10 power -20. And ये RT/NF का वैल्यू दिया है, RT/NF log कन्वर्जन वाला वैल्यू दिया हुआ है. Reduction potential at pH equal to 14 for this couple is something. pH equal to 14. करो कोशिश इसकी. साई किरण 5.4/7 blur. यार there you go. I'm unblurred now. चेहरा देख क्या करोगे, सवाल कर लो. नेगेटिव भूल गए थे. अच्छा आपने भी वही किया था. साई यस 5.4/7. अरे यार 5.4/7 तक चलेगा तो फिर आंसर भी दे ही दो. न्यूमेरिकल एंट्री है भाई, फ्रैक्शन में क्या दे रहे हैं आप आंसर? 5.4/7. ठीक है भाई, 5.4/7 मतलब 0.8 से थोड़ा कम, राइट? बिकॉज 7 into 8 is 56, so थोड़ा कम, राइट? गुड इवनिंग दक्ष, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन. I'll give you एक पूरा मिनट टू डू दिस. 1 मिनट से ज्यादा ही समय हो गया, बट ले लो आप 2 मिनट. I mean, क्योंकि 1 मिनट ऑलरेडी हो गया होगा. What's happening, Daksh? You guys don't have to call me sir and all. It's very formal and weird. I don't like. I know you're used to it. I know you mean it out of respect, but it's okay. So formality कोई जरूरत नहीं है. Just hi, hello works. Because sir is extra for you to type. 3 more letters. Kai go. It's all right. कोई जरूरत नहीं है. Really.
सो हाउ डू वी डू दिस वन? कैसे करें शुरुआत इसकी? Where do we start this question? Any inputs on the chat as to how we start this question? What's the approach? मेरे लिए अप्रोच सबसे जरूरी है. सवाल तो कर लोगे, तुम लोग बहुत मेधावी लोग हो. 26 minus 0.25. 26 minus 0.25. Okay. सम्यक अरमान पढ़ लो यार क्वेश्चन, तुम दोनों लोग सवाल पढ़ो ध्यान से. युवराज इज 25. सेल नहीं चल रही है पीयूष, हम तो कुछ बेच नहीं रहे, कंप्लीटली फ्री है. साई किरण 26. H plus OH KSP सम्यक यस. युवराज इग्नोर करो यार, लेट्स स्टडी ना. लोग जो भी बोलते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, हम लेंगे भगवान का नाम, काम करेंगे. सो एब्सोल्युटली राइट. H plus OH is KSP. अच्छा, interesting. Samyak is saying H plus OH is KSP. Okay. I like where this is going. So this is why I'm going to take what Samyak is saying. I'm just going to put it in a different way. What happens at pH 14? When pH is 14, you get OH minus concentration to be 1. Okay. So you're fixing OH minus on concentration. और KSP में क्या है? कॉपर है और OH माइनस है. अगर OH माइनस हो गया फिक्स, तो कॉपर बेचारे का कॉन्सेंट्रेशन बहुत गिर जाएगा कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन. सो मच सो कि इट्स सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज. बिकॉज व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सी यू हैव CuOH whole twice giving you Cu2 plus 2OH minus. Now solubility here is how much of CuOH you can actually dissolve with this. अगर ये आपने कर दिया है फिक्स, तो ये बहुत कम हो जाएगा. कितना होगा? जितना ये होगा. सो जितना आपके कॉपर 2+ आयन होंगे, उतना ही अमाउंट आपका होगा सॉल्युबिलिटी का. I have done this in some detail on the NEET channel. You can check out. मैंने JEE चैनल पे भी उसकी प्लेलिस्ट डाल दी है KSP आइडियाज की. It's the same. The theory is same. Trust me. मैंने NCERT के सवाल किए हैं in the session and they'll help you with JEE main also. Right? Check this out. अगर ये theory समझ में नहीं आ रही है तो. We'll go on with. I'll assume that you guys know कि ये भाई KSP का क्या आइडिया है. ठीक है? I'll go ahead because all of you have also given me the answer. So that's great. So from here you get that KSP is going to be equal to the copper 2+ ion concentration. क्यों? क्योंकि OH minus ion मैंने फिक्स कर दिया है to be 10 power 1, sorry, 10 power 0, which is 1, right? There's no confusion there, right? कि how I got OH minus to be equal to 1. देखो यार, this into this is equal to 10 power minus 14, है ना? pH equal to 14 पे H plus ion concentration is going to be 10 power minus 14. तो मतलब कि OH must be equal to 1 minus, that's it. OH minus will be equal to 1. Cool. So again, I'm going with the first principle. E equals to E naught minus RT Q. What is Q यहाँ पे? Q यहाँ पे होगा reduction potential CO2 plus 2 Cu, right? Plus इधर नहीं, इधर होगा plus 2 electron. 2 electrons plus ये, है ना? तो ये Q की वैल्यू मैंने यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है. ठीक है? Because I have all of these expressions also going with me in my this thing. कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन आएगी. दक्ष is saying 25, साई saying 25. साई शॉर्टकट कभी कभी आपको जो है महंगा पड़ सकता है. 25 is correct. अरमान 25 is the right answer. I agree. कॉपर कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा डायरेक्ट फिर. Exactly सम्यक. अरमान was saying that it is already given in the question. अच्छा मैं बोला था. अरमान नेगेटिव नहीं होगा ना? अरमान सवाल देखो ध्यान से. नेगेटिव यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है ना? नेगेटिव ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट? इसलिए वो नहीं होगा. ठीक है, अभी देख लेते हैं. ठीक है, थैंक्स फॉर शेयरिंग. इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट द आंसर. आंसर जरूरी नहीं है, प्रोसेस देख लो. सी समटाइम्स वी गेट टू कॉट अप इन, अरे क्या मैंने सही किया. उससे ज्यादा जरूरी है कि आपने ट्राई किया, उसके बाद सुन लेते हैं व्हाट इज अनदर वे टू डू इट. मे बी जो आपने किया मे बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई एम डूइंग. इट्स ओके, डजंट मैटर. बट एक बार सुन लो, मे बी यू लर्न समथिंग न्यू. इन दैट हरी ऑफ वांटिंग टू नो इफ यू गॉट समथिंग राइट, छोटी छोटी बारीकी की बातें मिस हो सकती है. तो वो बारीकी की बातें आप लोग ध्यान से सुनो भी. ठीक है? व्हाट इज दिस बारीकी की बात? मैं लिख रहा हूं यहाँ पे Q. ठीक है? आई हैव रिटन इट डाउन लाइक दिस. फर्स्ट प्रिंसिपल से अगेन एवरीथिंग, देन सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग. यहां पे देखो ये तो 1 हो गया बिकॉज वी डोंट कंसिडर सॉलिड कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन. ये हो गया ये. इसका यहां पे मैंने 2 डाला. 2 क्यों डाला? बिकॉज ऑफ द सेम थिंग, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. ओके, देन आई नो दैट दिस इज 10 power minus 20.
Okay, I have come to that conclusion as well. E naught value is given to me, ये यहाँ पे दिया हुआ है, into 20, खत्म. Now नीचे था -20, ऊपर जाके हो गया +20. ओके, ठीक है, लॉग वाला प्रॉपर्टीज. अब क्या करें? देखो E आया -0.25 volts. What is being asked for? -x times 10 power -2. So in this case, if I put x as 25, then I will get this to be -0.25, which is the answer. So 25 should be the answer. ठीक है? Okay. ओम पाठक, नेटफ्लिक्स ले लो यार, यहां क्या कर रहे हो? 199 का मिलता है, अच्छे शोज भी हैं. काला पानी बहुत प्यारा शो था. इफ यू गाइज लाइक साइंस, ओ काला पानी बहुत ब्यूटीफुल शो. हाईवेमैन भी बहुत क्या शो था. के मेनन भाई साहब और बाबिल खान और माधवन और दिव्येंदु, क्या शो था भाई. हाईवेमैन ब्यूटीफुल शो. वो भी, उसमें भी काफी चीजें थी, स्कैरी थिंग्स अबाउट मिथाइल आइसोसाइनाइड एंड हाउ इट प्रोड्यूस HCN. साइंस वाज देयर. इट्स क्वाइट स्कैरी. या ओम पाठक, तुम जा रहे हो टाइम आउट में, ठीक है? टाइम पास करना था, हमने कर लिया, और टाइम पास नहीं करेंगे. रुको, गिव मी 1 सेकेंड. आईज हैव जीरो टॉलरेंस अबाउट थिंग्स लाइक दिस. ठीक है, चलो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला सवाल किया जाए. ओ, ये वाला सवाल हमने किया था. वी डिड अ सिमिलर क्वेश्चन थर्सडे को ही किया था. मेटल फ्राइडे को ही किया था. Metal surface of 100 centimeter square area has to be coated with nickel layer of thickness, some thickness. A current of 2 ampere was passed through a solution of nickel nitrate for x seconds to coat the desired layer. Time निकालना है, x कितना है. Find x. KSP में KW और KSP का डाउट है. सम्यक, check out my session on equilibrium. I'll link it to you. I'll give you the playlist right now. अभी देता हूँ. You try this question out. Breaking Bad सही शो था. I learned from Breaking Bad that HF is a pretty strong acid. I mean, it's a weak acid theoretically, but yeah, it dissolves organic stuff very well. College first year. Yeah. 161. सही है अरमान, बहुत जल्दी आंसर देते हुए. Anybody else wants to back that up? Yes, related question. Related to what we did. Samyak wants कुछ KSP वाला चीज. Let me look for that while you guys rest of you try this out. Aakash, Byju's, JEE. अरे ये तो खुला है मेरे पास, बुकमार्क है. व्हाई एम आई टाइपिंग? बुकमार्क खोला. लेट्स गो टू प्लेलिस्ट. एंड प्लेलिस्ट में यू गाइस कैन आल्सो डू दिस बाय द वे. आकाश बायजू जेई पे जाओ, प्लेलिस्ट पे जाओ, एंड आई हैव मेड ऑल द प्लेलिस्ट ओवर हियर दैट आर रेलेवेंट टू यू गाइस. ठीक है? एंड आई सी और भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं. मैथ्स की भी प्लेलिस्ट है, फिजिक्स की भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं. यू कैन चेक दोज आउट. सिलेबस रिड्यूस, केमिस्ट्री ग्रेड 11. आपको ग्रेड 11 केमिस्ट्री चाहिए थी ना? केमिस्ट्री ग्रेड 11 नहीं, ये तो अलग वाला है. होल्ड ऑन. I know ये कहाँ पे. This is on the home page. Actually, home page पे you gotta go scroll down, and there is one section where I have made which has my videos for both JEE Main and Advanced, and वहाँ पे आपको equilibrium का playlist मिल जाएगा. I'll give you the link here anyway. One moment. Control X, and here we go. अरमान जी तो आंसर दे दिए, बाकी लोग नहीं बता रहे. युवराज also saying 161. ठीक है. युवराज saying 161. Okay, cool. All right. You guys have been asking about this a lot, huh? So let me just show you on the channel itself कि कहाँ पे है playlist. A lot of people ping me saying कि अरे हमको वीडियो मिलते नहीं है, क्या है, कहाँ पे गया है. रुको. I have made them for chemistry, so I'll just show you those right now. One moment. Let me show you a window capture. Where is this window? Blah 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 blah. There you go. Wait, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. अभी दिख रहा है? Here is the playlist. Just quickly hold on. Geometric isomerism. भारी चीजें पूछ लेते हो तुम लोग. बताता हूँ, रुको. So this is a home page, right? Scroll down a bit. You've got the latest sessions that are coming up. For you वाला छोड़ दो, that'll be different for you. Upcoming lives will come. Shorts आएंगे कुछ. PYQs, one shots are going to be here. Shorts, etc., etc. Scroll down a bit. Okay, this one has all the theory things you will need from me, right? I have whatever I have taught this academic year. आपको और भी देखने, you can look at the other ones also by whatever जो भी जिसके आपको चाहिए. And if you want to look at playlists generally from this channel, you just go to this thing here and go to the playlist section. ठीक है? So you will find all the playlists that we have made for this academic year right now. All right, back to our session right now. आप लोग कुछ बोल रहे थे. Let me go back and check that out. कोई ये सवाल कर रहा है? अच्छा, सवाल कर रहे हो आप लोग, कर रहे हो. Sai also saying 161. Harshil is saying, please give some tips for geometric isomerism. It's very irritating for ionic equilibrium also. Ionic equilibrium मैंने आपको जो है ऊपर दिया है.
I've done a lot of sessions on ionic equilibrium. मैंने theory भी की है, PYQs भी किए हैं. Check them out. Check out our playlist. Geometric isomerism. Do you mean in coordination compounds or do you mean in geometric और कहाँ आता है? Stereoisomerism वो भी मैंने किया है. Haloalkanes में I've done that. Oh yeah, cis trans and all. I've done that. And I'm sure Nitika भी करेंगी फिर से. But if you want to check out my haloalkane and stereoisomerism sessions. You will find that. Organic का वीडियो कब आएगा? कर तो रहे हैं. दक्ष नितिका जी कर तो रही हैं. खैर 161 इसका आंसर है. आगे चला जाए. हम लोग बहुत टाइम पास कर लिए इस सेशन पे, इस क्वेश्चन पे. या डेंसिटी और वॉल्यूम. निधि वेलकम बैक. निधि ऑलवेज अ प्लेजेंट सरप्राइज टू सी यू हियर. ग्रेट निधि. होल्ड ऑन. दिस गाय आस्क्ड मी नाउ यार, मुझे अभी उसको देना पड़ेगा. उसको कहाँ का ये बेचारे को जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला भी. सीरियो आइसोमेरिज्म यू मीन राइट? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है भाई. रुको. Why guys? You guys ask me things and I have to give them to you. Here you go. This is stereoisomerism in its entirety. जो मैंने किया है शॉर्ट में किया है. एंटायरिटी मतलब थोड़ा शॉर्ट में ही है. ठीक है, देख लेना. वो भाई साहब चले भी गए जो मांग रहे थे. हर्षिल कहाँ गया? हर्षिल गुप्ता. खैर 161 is absolutely right. Let's quickly look at this. Okay, what is, if you haven't subscribed already, please do. क्या कर रहे हो तुम लोग? Not you guys. I know on the chat तुम लोग तो है ही. पर जो लोग देख रहे हैं for some reason they haven't subscribed. What are you doing? This is the best channel on YouTube right now. That's going to help you for your JEE journey. Khair, work is ZIT, time is X, I is current is 2, Z hoga equivalent weight divided by 96,500. Why? See my electrochem sessions playlist mein diya niche if you want to know what on earth is this about, right? And the weight is density into volume, as Nidhi correctly pointed out. Now, be careful on this point, extremely careful. Density to 10 hai. Ab ye volume, what is this? Why did I do 100 into 1? 100 is the area, right? I am taking this in centimeter square. It's okay, centimeter square में लिया है. अब ये 1 into 10 power 4 minus 4 कैसे हो गया? This is 1 into 10 power minus 6 meter. Because this is 0.001 millimeter. मतलब 1 micrometer. This is going to be equal to 10 power minus 4 centimeter. क्यों? क्योंकि 100 centimeter equal to 1 meter. अगर ये सब चीज आपको रैंडम लग रही है तो अच्छी बात है. Do it quickly, brilliant. If you are messing up on this, धीरे धीरे करो. उसके बाद तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. राइट द एक्सप्रेशंस डाउन, थिंग्स गेट कैंसल्ड आउट, एंड व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज 965 by 6 which is 161 approximately. राइट, 161, नियरेस्ट इंटीजर्स 161. ऑलराइट, लिख देते हैं यहां पे. अगला सवाल किया जाए. इस क्लास के बाद चैट अवेलेबल नहीं होती युवराज, मतलब व्हाई इज दैट? नहीं, चैट तो हमेशा होती है. क्यों नहीं होगी चैट? चैट होती है भाई. साई वांट्स नेक्स्ट क्वेश्चन. साई हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन. Awesome, bro. Yuvraj, good to know, good to know. और by the way, let's rejoice. Solid state है JEE Advanced में. हमें लगी भाई इतना प्यारा चीज उन्होंने कैसे हटा सकते हैं वो लोग. That's great, निधि. या सवाल तो आए नहीं. Sorry. Here's the question. JEE Advanced का सवाल. मतलब we are near the end of our session. 5-10 मिनट में हो जाएगा सेशन खत्म. 5-10 मिनट और. लाइव चैट होती है युवराज, कैसे नहीं होगी? अगर if somebody trims the video ना, if somebody trims the video तब लाइव चैट नहीं होती है. मेरे वीडियो में I don't think that will be the case. Can you check? Can you check if in any of my videos that happens? Yeah. If somebody trims the video, only then chat goes away. You have time, you watch class on YouTube because better to learn something and waste time. Nidhi, lovely. You can read some amazing books, Nidhi, by the way. If you have a lot of time. Ghoom ke aao. I'm just saying, it's lovely to have you here. But campus life का best part है, वो जो natural scenery है ना, घूम के आओ, टहलो, fresh air is wonderful. That's something you are not going to get anytime unless आप किसी गवर्नमेंट के बंगलों में रह रहे हो. Seriously, the natural aspect of it at IISc, NIT, Surat, those are the best parts for me. It was insane. Anyway, अरमान आंसर बताते हुए 4. ये वाला है JEE एडवांस का सवाल, बट है काफी डायरेक्ट. ट्राई करके देखो. निधि ऑल्सो सेइंग 4. ओके, आंसर हो गया सही. प्रथम, लाइव चैट इज ऑलवेज देयर. प्रथम गिविंग द आंसर एज 4. ऑलराइट, स्वीट. Yeah, लाइव चैट तभी हटता है if somebody trims the video afterwards. After the fact, अगर कुछ वीडियो काटते हैं, कुछ कम करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, तब लाइव चैट हट जाता है. Otherwise always there. Samyak also saying 4. सही है, सही है. सीधा साधा है. क्या करना है इधर? कुछ नहीं करना है. डेल्टा जी माइनस NF E0. ओके, दैट इज लिटरली इट. और क्या करना है? राइट, देखो, दिस इज सेइंग दैट इस रिएक्शन का डेल्टा जी लीड्स टू दिस रिएक्शन. द ओनली थिंग यू आर सेइंग इज कि delta G is a state function. It is an extensive property which means it will depend on number of moles. यही आइडिया है.
तो इधर बेझिझक यू कैन यूज दिस इक्वेशन, देयर इज नो नथिंग रॉन्ग विद दिस. ओके ओके, so delta G will be some value which is 193 into minus this into this, and NF E naught will be this, this and X. What is X? X is number of moles. इधर कंफ्यूज मत होइए, सीधा साधा सवाल है. You be like, is X number of moles or is X number of equivalents? It's number of moles, because see, in 1 mole of this requires 2 electrons. You see that? 1 mole of M plus requires 2 moles of electrons. Okay? ठीक है? कूल, क्वाइट सिंपल, सीधा साधा सा है. यस शुभराज आदित्य, बिल्कुल सीधा साधा था. एक्स सीधे मिल जाता है 4. देखो ये था जेई का सवाल, जेई एडवांस का. एंड यू बी लाइक ब्रो, जेई मेन के सवाल सीम मोर ट्रिकी देन जेई एडवांस के. हो सकता है, कभी कभी कुछ भी हो सकता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लक. आखिरी सवाल आज का, आखिरी सवाल आज का. ये वाला भी डुएबल है, काफी डुएबल है. लगता है डरावना बट काफी डुएबल है. The electrochemical cell shown below is a concentration cell. This is a concentration cell. M2 plus saturated solution of a sparingly soluble salt MX2. ये है भाई NCERT में, ठीक है. And you got a salt bridge, and then you got M2 plus 0.001 mole per decimeter cube, same as mole per liter. The EMF of the cell depends on the difference in concentration. ये concentration cell पूरा define कर रहा है, of M2 plus ions and the 2 electrodes. एक बात बताओ, कहाँ पे होगी ज्यादा? Always, right? In a concentration cell, for it to be spontaneous. The EMF of the cell at 298 Kelvin is given. अच्छा, EMF भी दिया हुआ है. फिर भाई पता क्या करना है? डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है. आई, इसमें क्या करना है? All right, Bhavesh, that's lovely. You may find it to be a little tricky. Today's session may be a little tricky. Generally, you can. Electrochem, I feel maybe a little heavy for you. But generally, sure, you're most welcome. You're most welcome. I'm going to be starting mole concept ka revision on 30th November. Come join us, Bhavesh. It'll be great. All right. Can we do this? What's the answer here? Samyak saying D. Okay, Nidhi is giving me an interesting thing. निधि, हम करेंगे ये काम, बट चक्कर ये है ना निधि, जब हम ये करते हैं तो लोग डर जाते हैं. I did that. I got questions from this book called Zoomdal, and people like, bro, ये तो ज्यादा हो गया. And I think there's a general demand also for people to do this. And it's okay if people know the answers. कोई चक्कर नहीं है, you know. If they know how to solve it, मेरी 2 मिनट भी बात सुन जाएंगे ना, they will definitely get their marks in JEE. That's the goal. But JEE एडवांस के लिए मैं अलग से सेशन करूंगा. JEE मेन खत्म होने दीजिए. तो उससे पहले I was told यार अभी JEE एडवांस सेशन मत करो, क्योंकि students want JEE main questions. So I'm doing that. Students की डिमांड की वजह से I will do JEE advanced focus sessions as soon as JEE gets over. February first week में. Wait for it. हम लोग बहुत प्यारे प्यारे सवाल करेंगे, आपको ही मजा आएगा निधि. Yeah, all right. Answer is D. Answer is D. Answer is D. सम्यक अरमान, Wu Shang clan n factor concept सिखा सकते हैं. Wu Shang clan सिखाया है, Redox में सिखाया है मैंने बहुत डिटेल में. I'll give you the link to that. You can check it out. Go to this playlist वाला thing. I've told you how to do that, right? Go on the homepage of our thing. Scroll down. Look for Ashish. Look for my thing. Go to Redox and check it out. वहाँ पे है. Answer is D. Answer is D. Answer is D. Sir, all are saying D. No sir, we all want new questions. अरे वाह, why not A? King fan saying why not A? Okay, awesome. Minus 5.7. Sheikh. अच्छा, ठीक है. 5.7 या 11.4. यार 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए not 5.7. शेख जी, there are 2 electrons, right? Delta G is minus NFE. E is 0.059. So delta G is minus 0.059 into 96500 into 2. Okay, ये 2 if you skip, then if you skip that 2, you will get 5 point whatever. If you don't skip that 2, you will get 11.38, which is minus 11.4. ठीक है? That's Wu-Tang Clan, Samyak. the name of the band is Wu-Tang Clan. That's the name of the band. I'm not asking you to listen to it or anything. I'm just saying that's the name of the band. ठीक है शेख जी? A नहीं है. ठीक है? Answer is D. Yeah. Cool. That's it. With that, we're done for the day. You all want new questions. Yeah, see, good questions that I have are all subjective questions. Subjective questions करूंगा, आप लोग यार ये तो JEE की तैयारी नहीं हो रही है, right? But JEE advanced के लिए तो चाहिए. So right now I'm doing questions that are beneficial to you from JEE main point of view. The question that I really want to do will be beneficial to you from the JEE advanced point of view. वो हम करेंगे, that we'll do just after the first attempt gets done. ठीक है? वो questions are lovely, they're brilliant. Wait for it. I know बहुत टाइम है, फरवरी में बहुत टाइम है, बट उससे पहले हमको पूरा फिजिकल और पूरा इनऑर्गेनिक खत्म करना है. एंड
Nitika ji is going to be doing organic from chemistry point of view. So we have a lot in front of us, right? काफी chapters है, काफी चीजें हैं. If I add dilute HCl to Br minus ion, why do we get Br2 gas? Okay, Sai, ping me on IT Chem, I guess. Not something I'm in the frame of mind to talk about right now. काफी electrochem की अभी to switch gears into that is a little bit difficult for me to do. ठीक है, qualitative analysis. Yeah, I know. Sure. I know, bro, Sai. Yeah. Practice is good. New questions. Yes, Nidhi, you're absolutely right. You're 100% right. So the people who are chatting on the comments, they are exceptional, right? But there are a lot of people who watch the videos after this live. So they may want, यार PYQs ही करा दो उनके लिए बड़ी चीज है, right? If I do new questions, they will like, यार ये तो बहुत मुश्किल है. They may think it's not beneficial. It definitely is, right? So let's see. थोड़ा बहुत balance करना पड़ता है. These are all, most of these were 23K PYQs, but you have a lot of other PYQs to do. And दोस्तों, trust me on this and ask Nidhi as well. If you do just NCRT and PYQs and NCRT exemplar, बहुत सवाल हो गए already. JEE होने वाला है यार, आसानी से हो जाएगा JEE में. ये एडवांस में थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा. JEE में आसानी से हो जाएगा. All right. Now the target is JEE main. Yes, Vivraj, I get it. Yes, Rishi, absolutely, 100%. Sai, ping me on IT Chem, bro. Okay, I'm done for the day. Thank you so much for sticking around. Please share this with your friends. I have to say this. I know I keep saying this at the end of every session, but it's because I forget to say it during the session. Okay. If you haven't already subscribed, please subscribe to the video to get amazing content like this. All right. Have a fun Sunday and a great next weekend, rest of the week. I'll see you again on Tuesday or Thursday. हम लोग शुरू करेंगे पूरा revision. Okay. Bye bye. Good night. And I'll see you soon. Bye. Thank you. Thanks everybody.